हॉस्पिटैलिटी की चमचमाती दुनिया, जहां हर मेहमान का अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है, वहां एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत ढांचा काम करता है। ये ढांचा मेहमानों, कर्मचारियों और बिजनेस सबकी हिफाजत करता है। तो आज हम इसी इनविजिबल फ्रेमवर्क यानी भारतीय कानून को समझने वाले हैं। तो वो कौन सी अदृश्य शक्ति है, वो क्या चीज़ है जो हॉस्पिटैलिटी की इस दुनिया में हर मेहमान, हर कर्मचारी और हर बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है? जवाब है कानून। यही वो ढांचा है, ये पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, जो ये पक्का करती है कि सब कुछ सही तरीके से और ईमानदारी से चले। ठीक है, तो ये ढांचा कानून है, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये कानून आखिर है क्या? चलिए इस इंडस्ट्री के खेल के नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो कानून सरकार के बनाए हुए नियमों का एक सेट है, और समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय बना रहे, इसके लिए हर इंसान और हर ऑर्गेनाइजेशन को इसे मानना ही पड़ता है। यह हमें बताता है कि क्या करना सही है, क्या गलत, और अगर नियम तोड़ें तो क्या होगा। अब जरा जॉन ऑस्टिन की इस परिभाषा को देखिए। वो कहते हैं, कानून एक संप्रभु का आदेश है जिसके पीछे प्रतिबंध होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नियम एक अथॉरिटी बनाती है, और अगर कोई उन नियमों को नहीं मानेगा तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। सिंपल। वहीं सर जॉन सैलमन का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कानून को न्याय प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किए गए सिद्धांतों का समूह कहते हैं। यहां फोकस इस बात पर है कि स्टेट या सरकार न्याय देने के लिए इन नियमों को कैसे लागू करती है। तो ये सारी परिभाषाएं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में असल में कैसी दिखती हैं? अरे ये हर जगह है। खाने की सेफ्टी के नियमों से लेकर होटलों में आग से सुरक्षा तक, कर्मचारियों के काम करने के घंटों से लेकर मेहमानों के अधिकार और उनकी प्राइवेसी तक, यहां तक कि बार का लाइसेंस भी इन्हीं कानूनों के तहत मिलता है। सोचिए जरा, इनके बिना होटलों में क्या हाल होगा, पूरी तरह से अफरा तफरी। तो अब सवाल यह है कि ये कानून इतने जरूरी क्यों हैं? बात सिर्फ ऑर्डर बनाए रखने की नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये भरोसे की नींव है। चलिए एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद एक मेहमान बीमार पड़ जाता है। अब बताइए, कौन जिम्मेदार है, होटल, शेफ या मेहमान खुद? ये स्लाइड इसका जवाब बहुत अच्छे से देती है। अगर कानून नहीं होता तो कोई साफ सुथरा हल नहीं होता, कोई जवाबदेही नहीं होती, बस कंफ्यूजन होता। लेकिन कानून के रहते एक साफ रास्ता है। मेहमान मुआवजे के लिए क्लेम कर सकता है, मतलब न्याय का एक रास्ता मौजूद है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कानून। कानून ही एक बिजनेस और उसके ग्राहकों के बीच भरोसे का पुल बनाता है। जब ग्राहकों को पता होता है कि उनकी सुरक्षा के लिए नियम कायदे हैं, तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं, और यही एहसास तो हॉस्पिटैलिटी की जान है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि कानून क्या है और क्यों जरूरी है, तो अगला बड़ा सवाल ये है कि भाई ये नियम कानून आते कहां से हैं? हमारे देश भारत में कानून के 5 मुख्य स्रोत हैं। यही वो 5 स्रोत हैं जो मिलकर भारतीय कानून की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। ये हैं भारत का संविधान, वैधानिक कानून यानी स्टैट्यूटरी लॉ, प्रथागत कानून यानी कस्टमरी लॉ, न्यायिक मिसालें यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, और व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉज। चलिए एक एक करके इन सब को डिकोड करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले और सबसे ऊपर है भारत का संविधान। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, मतलब ये सुप्रीम है। हर दूसरा कानून, हर नियम इसी के आधार पर बनना चाहिए। ये हमारे मौलिक अधिकार, हमारी ड्यूटीज और सरकार की ताकतों को तय करता है। इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण है। कोई भी होटल किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म के आधार पर अंदर आने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है। देखिए कैसे संविधान सीधे सीधे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को प्रभावित करता है। अब आते हैं दूसरे स्रोत पर, जो है स्टैट्यूटरी लॉ या वैधानिक कानून। ये वो कानून हैं जिन्हें हमारी संसद और राज्यों की विधानसभाएं बनाती हैं और पास करती हैं। इन्हें अधिनियम या एक्ट्स भी कहा जाता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए ऐसे कई जरूरी एक्ट्स हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये कानून खाने की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, ग्राहकों के हक की रक्षा करते हैं और कर्मचारियों के साथ सही बर्ताव सुनिश्चित करते हैं। तीसरा स्रोत है प्रथागत कानून यानी कस्टमरी लॉ। ये वो परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं।
इतने लंबे समय से कि अब उन्हें कानून की तरह ही माना जाने लगा है। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रथा हमारे संविधान के खिलाफ या नुकसानदेह हो तो उसे कानून नहीं माना जाता। हमारा चौथा स्रोत है न्यायिक मिसालें, जिसे केस लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे बड़े न्यायालयों ने पुराने मामलों में जो फैसले दिए हैं, वो आगे आने वाले वैसे ही मामलों के लिए एक गाइड का काम करते हैं। जब भी कोई मिलता जुलता केस आता है, तो जज उन पुराने फैसलों को ध्यान में रखते हैं। और हमारा पांचवां और आखिरी स्रोत है व्यक्तिगत कानून, यानी पर्सनल लॉज। ये कानून किसी व्यक्ति के धर्म पर आधारित होते हैं, जैसे हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ। ये ज्यादातर शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों को देखते हैं, और इनका असर खासकर फैमिली बिजनेस या प्रॉपर्टी पर पड़ सकता है। तो अब तक हमने कानून की परिभाषा और भारत में उसके 5 स्रोतों को समझ लिया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारा फाइनल टेक अवे क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। भारतीय कानून इन 5 स्तंभों पर टिका है। पहला, संविधान, जो सबसे ऊपर है। दूसरा, वैधानिक कानून, जिन्हें हमारी सरकारें लिखती हैं। तीसरा, प्रथागत कानून, जो हमारी परंपराओं से आते हैं। चौथा, न्यायिक मिसालें, जो अदालतों के फैसलों से बनती हैं। और पांचवां, व्यक्तिगत कानून, जो धर्म पर आधारित हैं। और आखिर में बस ये एक बात याद रखने की है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब सिर्फ मुस्कुराकर सेवा देना नहीं है। इसका मतलब कानून के दायरे में रहकर सेवा देना भी है, क्योंकि यही अदृश्य ढांचा है जो हर मुस्कान को सच्चा और हर अनुभव को सुरक्षित बनाता है। All right, today we're diving into something that's all around us, but almost completely invisible. It's this hidden framework that governs the entire world of hospitality. You know, the rules we encounter every single time we travel or dine out, but maybe rarely stop to think about. I mean, really think about it for a second. When you're ordering a meal or getting that room key, what is the unseen force making sure everything is safe and fair and, reliable? It's a huge question, and one we honestly take for granted most of the time. Well, the answer is both simple and incredibly powerful. The law. It's this complex system of rules just working silently in the background to protect everyone involved, from you, the guest, all the way to the business owner. Now, this isn't just any law we're talking about. It's actually a super specialized field with its own unique set of rules. So, what exactly is hospitality law? Okay, the easiest way to think about it is like the official legal rulebook for the entire service industry. We're talking everything from a 5-star hotel to a local cafe, from travel agencies to airlines. It provides the core principles that keep this massive industry running smoothly and, most importantly, safely. So at its heart, hospitality law is all about managing 4 key relationships. First, the promises a business makes to its guests. Second, the rights of its employees. Third, the licenses and permits it needs from the government. And finally, its broader responsibility to society as a whole. But to really get a handle on this, let's take one quick step back. What are we actually talking about when we use the word law? At its most basic level, law is kind of like society's instruction manual. It's a set of rules, right, made by a government to keep things from just spiraling into chaos and to make sure there's a fair way to solve problems when they pop up. And legal scholars have been defining this for centuries. You've got John Austin, who put it very directly. He said law is a command from a sovereign, the ruling power, that's backed by a sanction, which just means a penalty. So in short, it's a command with consequences. It has teeth. But it's not just about power and punishment, right? Sir John Solomon had a slightly different take. He saw it as the set of principles the state actually uses to administer justice. So it's more about achieving a fair outcome for everybody. So the bottom line is this. Law draws the lines for us. It creates a predictable, stable environment by making it crystal clear what's allowed, what's not, and what happens when you cross that line. Okay, so we have these definitions, but why is this framework so absolutely crucial? Especially in an industry like hospitality, where it seems like the only goal is just good service? Let's use a really practical and sadly pretty common scenario. You go out, have a meal, and you get food poisoning. Yikes. What happens next? Who's to blame? How do you actually get justice? And this is where the difference becomes so clear. Without law, that sick guest has no real path to a solution. It's just their word against the restaurant's. Chaos. But with a legal framework, you have established food safety rules and a clear process to hold that business accountable.
safety, and accountability. Ultimately, this whole thing boils down to one word: trust. You trust that the food won't make you sick, that the room is clean, that you won't get scammed. And that trust isn't just based on a business's good reputation. It's built on a solid legal foundation that makes sure these basic standards are actually being met. So if these laws are so important, where do they come from? To understand that, let's take a look at the legal system in India, which is really interesting because it draws its authority from several distinct and sometimes ancient sources. See, in India, the law isn't just one giant book you can pull off a shelf. Nope. It's more like a rich tapestry woven together from 5 primary threads. You've got the Constitution, right at the very top. Then there are laws from Parliament, long-standing customs, decisions from court cases, and finally, personal religious laws. Let's break each one down real quick. First and foremost is the Constitution. It's the bedrock. Every single other law has to align with it, period. And for hospitality, its guarantee of fundamental rights is absolutely huge. For instance, it's the Constitution that says a hotel cannot legally discriminate against guests based on their religion or gender. Next up, we have statutory law. These are the specific acts that are written and passed by legislative bodies, like Parliament. For our topic, think of acts like the Food Safety Act or the Consumer Protection Act. These are the day-to-day rule books that regulate quality and protect us as customers from unfair practices. Now, this next one is fascinating: customary law. These are basically unwritten rules. They're based on traditions that have been followed for such a long time that they've actually gained the force of law. But there's a huge catch. A custom is only valid if it doesn't clash with the Constitution or, basic human dignity. From the ancient, we move to the ever-evolving judicial precedents, which you might also hear called case law. So when a high court makes a big decision in a new type of case, say a dispute over a guest's privacy, that decision sets a precedent. It becomes the rule that lower courts have to follow in similar cases in the future. And finally, there are personal laws. These are tied to specific religions, and they govern personal matters, things like marriage and inheritance. Now, they might not seem directly related to a big hotel chain, but they are incredibly important for, say, family-owned restaurants or guest houses, because they can affect who owns the business and how it gets passed down. So after looking at what law is, why it matters so much, and where it all comes from, what's the big picture takeaway for the entire hospitality industry? So, what's the most important thing to remember? It's this: law isn't some burden. It's the very backbone that supports the whole industry. It creates a circle of protection for everyone, it builds that essential trust we talked about, and it draws its authority from a really diverse set of sources, from the modern Constitution all the way back to ancient customs. And this final idea just says it all, doesn't it? A welcoming smile is great. It's important, but it's pretty much meaningless without that guarantee of safety, fairness, and accountability that only the law can provide. Real, true hospitality operates not just with warmth, but within the strong, protective framework of the law. Thanks for watching.